Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to discuss remaining numerical of chapter number 12, current electricity. Some of the numericals we have done in our previous lectures, or we can say that some of the numericals from question number 1 to question number 3 and question number 8 we have done in our previous lecture in different topics. Now today we are starting uh, solving numericals from question number 4 to so on up to end question or up to question number 10. Now starting our lecture from question number 12.4, which is given in your book on page number 108. It is an exercise numerical. According to it, a typical 12 volt automobile battery has a resistance of 0.012 ohm. एक बैटरी ऑटोमोबाइल बैटरी है जिसका वोल्टेज 12 वोल्ट है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.012 ohm गिवन है. What is the terminal voltage of the battery? बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? When the starter drawn a current of 100 ampere, जब वो स्टार्ट करती है ऑटोमोबाइल, जब इग्निशन स्टार्ट करता है तो उस वक्त 100 एम्पेयर का करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो करता है. तो इस सूरत में उस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, प्लस कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. पावर ऑफ द बैटरी, बैटरी की पावर क्या है? पावर डिसिपिएटेड ऑन लोड, लोड पे कितनी पावर डिसिपिएट हो रही है, एंड पावर डिसिपिएटेड इनसाइड द बैटरी इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी पे कितनी पावर कंज्यूम हो रही है. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, रेजिस्टेंस R is equals to 0.012 ohm, EMF ऑफ द बैटरी 12 वोल्ट, करंट जो कि यहाँ पे सप्लाई हो रहा है वो 100 एम्पेयर है. हमें फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT, रेजिस्टेंस कैपिटल R, बैटरी पावर PE, पावर एट लोड PR, पावर कंज्यूम बाय बैटरी यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर कंज्यूम हो रही होगी वो हमें बतानी है P स्मॉल r. सॉल्यूशन, we know that EMF of the battery equals to VT plus IR, यानी कि EMF of the battery टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR के बराबर होता है. रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूले को तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा E minus IR के. By putting the values in above formula, we get terminal potential difference which is equals to 10.8 volts. Now for the resistance, resistance equals to terminal potential difference divided by current. By putting the values 10.8 divided by 100, we get 0.108 ohm. It is the load resistance or the resistance which is connected outside the circuit, or we can say that outside the battery. Now power, which is equals to I square R plus R. By putting the values, we get PT is equals to 1200 watt. Now PR is equals to I square R. PR is equals to 100 square multiplied by 0.108, and PR यानी कि power consumed on load or dissipated on load is equals to 1080 watt. Now power consumed inside the battery, I square R. By putting the values in our formula, we get PR is equals to 120 watt. Now question number 5. A 10 volt resistor has a value of 120 ohm. What is the rated current through the resistor? एक resistor है जिसकी voltage जिसकी पावर 10 वोल्ट है और उसके अंदर जो उसकी जो सलाहियत है, जो उसकी रेजिस्टेंस है वो 120 ओम है. हमें बताना है व्हाट इज द रेटेड करंट थ्रू द रेजिस्टर. उस रेजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, पावर आपके पास 10 वोल्ट गिवन है, रेजिस्टेंस 120 ओम गिवन है. हमें फाइंड करना है करंट को, कि करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी.
according to the formula, power consumed at resistance R, P is equals to I square R. We have to calculate I, so rearrange the formula. I square is equals to P over R, and I is equals to radical P over R. By putting the values in the above equation, we get फाइनल रिजल्ट विच इज 0.2886 एम्पेयर, यानी कि ये करंट आपके पास उस सर्किट में से पास हो रहा होगा. Now question number 6, a resistor of 50 ohm has a potential difference of 100 volt DC across 1 R. एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसमें से एक डीसी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का पास हो रहा है 1 घंटे तक. कैलकुलेट पावर एंड एनर्जी. वहां पे जो पावर कंज्यूम हो रही है वो निकालनी है, और वहां जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो आपने फाइंड करनी है. अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, रेजिस्टेंस आपके पास 50 ओम गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 100 वोल्ट, टाइम आपके पास जो है वो 1 आवर यानी कि 3600 सेकंड, 3600 सेकंड्स आपके पास गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड पावर फर्स्ट थिंग, and second thing is energy, both consumed on that circuit. ये दोनों हमें निकालनी है. सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका. पावर कंज्यूम्ड एट रेजिस्टेंस R is P is equals to V square over R. आपके पास पावर का जो सेकंड फॉर्मूला है वो आपके पास है P is equals to V square over R. By putting the values, P is equals to 100 square divided by 50, and P is equals to 200 watts. Now energy is equals to E is equals to P into delta T. Putting the values, we get E is equals to 0.72 mega joules. This is your answer. Now question number 7, calculate the current through a single loop circuit if E is equals to 120 volt, यानी कि बैटरी EMF 120 volt given है, R is equals to 1000 ohm and internal resistance is equals to 0.01 ohm. हमें करंट फाइंड करना है एक सिंगल लूप सर्किट के अंदर जिसके अंदर एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज 120 वोल्ट है, उसकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है, और उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.01 ओम गिवन है. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, EMF of the battery is equals to 120 volts, resistance 1000 ohm, is internal resistance 0.01 ohm. Now we have to find current. Solution करते हैं. I is equals to E over R plus R. By putting the values, we get final result 120 milliampere. Now question number 9. Question number 8 we have done in our lecture which is on Kirchhoff law. उसमें मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स दी थी, एक मैंने सॉल्व करवाई थी, वो आपकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल ही थी, क्वेश्चन नंबर 8, और एक आपको होमवर्क के तौर पर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दी थी. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको सॉल्व करना है तो आप किरचॉफ लॉ के लेक्चर में से लास्ट में जो न्यूमेरिकल है उससे जो आपको सॉल्व न्यूमेरिकल आपके पास मौजूद है उस सॉल्व न्यूमेरिकल को देख के आप कर सकते हैं. वो सॉल्व न्यूमेरिकल बेसिकली उस एक्सरसाइज न्यूमेरिकल ही, वो आपकी वो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल ही है जो कि आपके पास 12.8 करके आपके बुक में गिवन है. नाउ 12.9, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट ऑफ फिगर दिस. आपके पास एक डायग्राम मौजूद है, एक सर्किट डायग्राम मौजूद है जिसमें 8 ओम की रेजिस्टेंस मौजूद है. ये 8 ओम की रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, साथ में आपके पास 24 वोल्ट्स की एक बैटरी टर्मिनल बनाया गया है, और उसके साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस 0.1 ओम को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, और उसके गिर्द एक ब्रैकेट बना दिया गया है. इसी तरह से दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास मौजूद है, प्लस 0.9 ओम की एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और उसके गिर्द भी एक सर्कल बना दिया गया है. इसका मतलब है ये जो सर्कल आपके पास मौजूद है ये शो कर रहा है आपके पास बैटरी को, यानी कि ये
24 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आपके पास 0.1 ओम की स्मॉल रेजिस्टेंस। ये पूरी एक बैटरी है जो कि शो कर रही है कि एक बैटरी जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम की मौजूद है, दूसरी तरफ एक बैटरी है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओम की मौजूद है, और हमें यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों सेल्स का या इन दोनों बैटरीज का जो लेफ्ट और राइट इस सर्किट में मौजूद हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, E1 यानी कि आपके पास फर्स्ट EMF की वैल्यू 24 वोल्ट्स, E2 6 वोल्ट्स, स्मॉल r1 0.1 ओम, स्मॉल r2 0.9 ओम, कैपिटल R जो कि आउटसाइड आपके पास मौजूद है सर्किट के अंदर वो है 8 ओम। वी हैव टू फाइंड terminal potential difference of first cell, terminal potential difference of second cell. Now solution. Here both EMF opposes each other, so net EMF equal to the difference between each other. यहाँ ये दोनों जो EMF हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो करंट एमिट आउट हो रहा होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो टोटल EMF होगा वो इन दोनों EMF के दरमियान का डिफरेंस होगा। And here the resistance are in series, so equivalent resistance is equal to the sum of all resistances। और अगर आप रेजिस्टेंसेस को देखें तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपके पास सीरीज में मौजूद हैं, स्मॉल r1, स्मॉल r2 और कैपिटल R। तो तीनों का सम अगर हम करेंगे तो तीनों को ऐड करके हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला I is equals to En over Rn, यानी कि टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। I is equals to E1 minus E2 डिवाइड बाय R1 प्लस कैपिटल R प्लस R2। यानी हमने सबसे पहले जो बात की कि यहाँ पे डिफरेंस आएगा दोनों EMFs का, तो वो E1 माइनस E2 हो गया, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी तमाम रेजिस्टेंस का सम होगा, क्योंकि तमाम की तमाम रेजिस्टेंसेस एक साथ सीरीज के अंदर मौजूद है, इस वजह से सबको ऐड कर लिया गया है। Now putting the values, we get 24 ampere. Now terminal potential difference of each cell will be, अब हम अगर terminal potential difference निकालें हर सेल का according to the formula, terminal potential difference of first cell E1 minus IR1 by putting the values of E1, I and R1, we get terminal potential difference of first cell which is equals to 23.8 volts. Now terminal potential difference of second battery या second cell भी कह सकते हैं E2 minus minus IR2। अब यहाँ मैंने माइनस आई क्यों दिया है, क्योंकि वो पहले वाले I के नेगेटिव डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, इस वजह से यहाँ पे इस I को हमने नेगेटिव साइन के साथ शो किया है। सो जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 and we get second terminal potential difference which is 7.8 volts. Now the last question of this exercise numerical is question number 10. The voltmeter in the circuit at the right may be considered to be ideal. Values are E is equals to 15 volt, internal resistance 5 ohm, external resistance 100 ohm, second external resistance 200 ohm. Calculate the current in R1। आपके पास एक सर्किट मौजूद है जिसमें एक वोल्टेज यानी कि वोल्ट मीटर मौजूद है, साथ में तीन रेजिस्टेंसेस यहाँ पे दिखाई गई हैं। आपसे कंडीशन दी गई है कि ये वोल्ट मीटर आइडियल माना जाए अगर अप्लाइड EMF 15 वोल्ट्स हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट EMF और बैटरी जो है वो 5 ओम हो, एक्सटर्नल जो दो रेजिस्टेंसेस आपके पास मौजूद हैं R1 और R2 ये 100 और 200 ओम हो रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है कि करंट फ्रॉम R1 यानी R1 रेजिस्टेंस जो है उसमें से कितना करंट पास हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा E is equals to 15 volts, R1 is equals to 100 ohm, R2 is equals to 300 ohms, R is equals to 5 ohm। सॉरी मैंने इससे पहले 200 ohm कह दिया था, ये बेसिकली 300 ohm है।
R is equals to 5 ohm. We have to find current I through R1 which is equals to हमें find करना है. Now solution. First we have to find equivalent resistance R equivalent. Here R1 and R2 are parallel to each other. यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है जिसमें हमारे पास R1 और R2 एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं 1 over R dash is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 and by applying the values or putting the values we get R dash is equals to 75 ohm. Now small r and R dash are in series with each other, so R equivalent is equals to small r plus capital R dash. By putting the values R equivalent 5 plus 75, we get R equivalent 80 ohms. Now from Ohm's law, I is equals to E over R equivalent यानी कि EMF divided by equivalent resistance. I is equals to 15 divided by 18 values put करें अगर इसमें and I is equals to 0.1875 ampere. ये आपके पास आंसर आ जाएगा I का. Now this current I pass through both small r and capital R, then terminal potential difference will be Vt is equals to IR dash, and by applying or putting the values we get Vt is equals to 14.06 volts. Now current through R1 will be I1 is equals to Vt over R1. अगर वैल्यूज को पुट कर दें we get 0.1406 ampere which is passing through resistance R1. Thank you students. Now on next lecture we will discuss our short question answer. This is your today's lecture. If you feel any trouble you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. Thank you again.